We are studying the chapter fraction and decimals. Today we will solve exercise 2.2. Before we solve the exercise 2.2, let us discuss multiplication of a fraction by a whole number. Let us take a simple example. If 5 plus 5 plus 5, it can be written as 3 into 5. So, multiplication of a fraction by a whole number. Let us, for example, take a circle and divide it into 4 equal parts and shade its one part. So shaded parts fraction will be 1 by 4. Let us take another circle and again divide the second circle also in 4 equal parts. Then shaded part will show the fraction 1 by 4. अगर हम इन दोनों फ्रैक्शंस को कंबाइन कर दें, इन दोनों पिक्चर्स को कंबाइन करें, then we will get a picture like this. So this shaded part, two shaded parts of this circle, they will show 2 by 4. So 1 by 4 plus 1 by 4, it can be written as 2 into 1 by 4, but it is equal to 2 by 4. 1 by 4 को ऐड कर दिया तो इतना होगा 2 by 4. 1 by 4 plus 1 by 4 can be written as 2 into 1 by 4. So it means 2 into 1 by 4 can be written as 2 upon 4. Means 2 is a whole number and 1 by 4 is fraction. इनको अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो 2 will be multiplied with 1, 2 into 1 upon 4. So 2 into 1, 2 upon 4. So in this way we can multiply a fraction with a whole number. Let us take one more example. Suppose we have got a square and divide this square into 4 equal parts. Out of these 4 equal parts, I am shading the one part. So fraction represented by this part will be 1 by 4. Now again take one more square, divide it into 4 equal parts and shade its one part. Again shaded part will be represented by 1 by 4. Now again take one more square and divide it into 4 equal parts and shade one part, so it will become 1 by 4. अगर हमने इन तीनों को कंबाइन करना है तो कंबाइन हम कैसे कर सकते हैं? 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4. अब 1 by 4 को हम 3 times ऐड कर रहे हैं तो it can be written as 3 into 1 upon 4. So इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें जो पिक्चर मिलेगी that will be इन तीनों पिक्चर्स को अगर कंबाइन करें तो हमें ये पिक्चर मिलेगी और ये पिक्चर हमें कितना दिखा रही है? फ्रैक्शन 3 by 4. So this 3 into 1 by 4 it is equal to 3 by 4. So अगर हम होल नंबर 3 को 1 by 4 एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें, 3 होल नंबर है और 1 by 4 जो है वो फ्रैक्शन है, then it is equal to 3 by 4. It means 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं upon 4. So it is 3 upon 4. So in this way the whole number can be multiplied with a fraction. Now let us come to the exercise
2.2 क्वेश्चन नंबर 1. First question is, which of the drawings A to D show? So first part 2 into 1 by 5, second part 2 into 1 by 2, third part 3 into 2 by 3, fourth part 3 into 1 by 4. So on the right side we have a circle is divided into 3 parts and 2 parts are shaded. Again, second circle is also divided into 3 equal parts and 2 parts are shaded. Again, third circle is divided into 3 equal parts and 2 parts are shaded. B part, this is A part. B पार्ट में जो डायग्राम दे रखी है वो एक स्क्वायर है और स्क्वायर का 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके 1 पार्ट शेड किया है. सेकंड अगेन स्क्वायर, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और इसका हाफ जो है शेड कर रखा है. सी पार्ट में हमें डायग्राम दे रखी है, 3 स्क्वायर्स दिए हैं. हर एक स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और 1 पार्ट शेड किया है. In D part, a circle is divided in, we are given 2 circles. Each circle is divided into 5 equal parts. So this is the first question. We have to match the parts on the left hand side with the right hand side. So first part is 2 into 1 by 5. So इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2 डायग्राम्स हैं और हर एक डायग्राम में एक डायग्राम को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो इनमें से 4 पार्ट्स में अगर देखें तो ये डी पार्ट जो है इसमें एक सर्कल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 1 पार्ट शेड किया, मींस इट रिप्रेजेंट्स 1 by 5 और दोनों सर्कल 2 सर्कल है, इट मींस इट रिप्रेजेंट्स 2 into 1 by 5. नेक्स्ट 2 into 1 by 2.
मीन्स दो डायग्राम्स हैं और हर एक डायग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो दिस इज द सेकंड पार्ट, B part 2 into 1/2. So these are two squares and each square is divided into 2 equal parts. Now third is 3 into 2/3. मीन्स हमारे पास तीन डायग्राम्स होने चाहिए. तो तीन कहाँ पे हैं? 1 2 3 एंड one circle is shaded as 2/3. So this one circle represents 2/3, this also represents 2/3, and this also represents 2/3. So this 3 means these are 3 diagrams. So third part is matching with the A part, and last part is 3 into 1/4. So last part left with us is C part. So this represents 1/4, 1/4, 1/4. So these are 3 squares. So fourth part can be matched with C part. So in this way you can show the multiplication of a whole number by a fraction in form of diagrams also. Now let us see third question. Question number 3, first part, 7 into 3/5. 7 into 3/5. So 7 is a whole number and 3/5 is a fraction. So we are multiplying a whole number with a fraction. So how to multiply whole number with a fraction? So whole number is multiplied with the numerator upon 5. So 7 3s are 21/5. सो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. तो 21 डिवाइडेड बाई 5, 5 4s are 20, रिमाइंडर 1. सो ये क्या बनेगी फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन 4 whole 1/5. सो इन दिस वे यू कैन मल्टीप्लाई ए नंबर विद ए whole number with a fraction. So remaining parts of this question third you can solve, all are same. So this is all for today. Thank you.